नमस्कार आपण मानक समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। आज यही वीडियो में आपण सहित +3 फर्स्ट सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 4 रो यूनिट 2 रीजनलिज्म रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रो 3 मार्क्स क्वेश्चन आपन शेयर करबी। मैं पूर्व मध्य यूनिट 1 रो 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी शेयर कर सारी। जदि आपन देखि नांती ताले चैनल को जाय देखि पारबे और वीडियो रो आगु को म कहबी जे आपन माने पीडीएफ कि पाइ पारबे। तो चलन स्टार्ट करबा। राइट सर्ट ऑन प्रोचियलिज्म माने कौन संकीर्णता पर लेख ना व्हेन द पीपल ऑफ रीजन सी रीजन माने कौन गोटे प्रदेश किसी लोक देखते जे ओनली देयर इंटरेस्ट एंड सम नेशनलिस्ट आउटलुक माने राज्यर राष्ट्रवादी माने इंटरेस्ट छाड़ी निजर खाली गोटे प्रदेश इंटरेस्ट कथा देखती से कौन कौन द प्रिंसिपल of brotherhood, dignity and individual instinct of Indian constituency such as ideology is called to प्रोचालिज्म बा संकीर्णता। इट इज मैनिफेस्टेड व्यक्त करे कौन ना आज डिस्टिंग तिरस्कार फॉर अदर्स समटाइम्स लीडिंग टू वायलेंस सच मेनी पीपुल्स टाइम्स सी देमसेल्स as superior to others in culture। किसी लोक मैंने कौन निज कल्चर को निजक अति सुपीरियर भाविक अन्य कल्चर को कौन टे छोट माने नित्य नजर देखती लैंग्वेज इटिसी वायलेंस बाय शिवसेना अगेंस्ट साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियंस बाय यूएलएफए कार्डा अगेंस्ट द पीपल फ्रॉम बिहार फॉल इन दिस कैटेगरी। जो थिला ये कौन ए कैटेगरी प्रोचालिज्म बा संकीर्णता कैटेगरी जाउछि कारण ना वायलेंस ऑफ बाय द शिवसेना कहा को अगेंस्ट द साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस बाय यूएलएफए कार्ड यूएलएफए कार्ड अगेंस्ट पीपल फ्रॉम बिहार फॉल इन द दिस कैटेगरी। नेक्स्ट देखिबा राइट शॉर्ट नोट ऑन रीजनलिज्म रीजनल कल्चर माने कौन आंचलिक संस्कृति कौन ना इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द हिस्टोरिकल और रीजनल कल्चर्स कंसंट्रेट द प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ रीजनलिज्म द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंपोनेंट्स इंटरप्रेट माने कौन व्याख्या कर दीजिए कौन ना रीजनलिज्म बाय द वे कल्चर हेरिटेज उत्तराधिकार फोल्कलर लोक साहित्य माइथस माने पुराण कथा सिंबलिज्म एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एसेप्ट नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट जो खास करी कल्चर माने सांस्कृतिक स्वरूप को नहीं कौन गठित होची। बिसाइड द इकोनॉमिक इश्यूज यह छड़ा द रीजनल कल्चर प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड एज ए स्टेट। नेक्स्ट देखिबा राइट सर्टन रीजनलिज्म माने कौन ना रीजनलिज्म कहले हम बुझिया कौन इट इज नेचुरल फॉर ए कम्युनिटी टू सी विथ इन द डेस्टिनेट एंटिटी हैविंग आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर बेस्ड ऑन द बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर रीजन कल्चर इटीसी माने कौन इट इज ए नेचुरल कम्युनिटी माने गोटे साधारण नेचुरल कम्युनिटी टू सी देखे जे विथ इन अज ए डेस्टिनेट एंटिटी माने गोटे अलग भाव निज देखिए आंचलिक बाद रीजनलिज्म तो निज सामने गोटे अलग भाव देखिए हाव आइडेंटिटी डिफरेंट फॉर मदर्स अन्य मान निज भाव कौन अलग आइडेंटिटी देवे और द बेस्ड ऑन बिलोंगिंग से कौन गोटे पार्टिकुलर जो बिलोंग करते रीजन हो कल्चर हो व्हेन सच conscious or unconscious distinct identity becomes an ideological force uniting these peoples around a common cause building sub-national loyalties and leading to organization demonstrations movements or any other kind of effort for achieving their goals is called regionalism. This assertion of regional assertion माने कौन जोर देवा कौन पे आंचलिक आइडेंटिटीज कैन बी फ्यूदर इकोनॉमिक एंथिटिक कल्चर लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट भाषागत माने इंटरेस्ट मध्य स्वार्थ दृष्टि करस्पॉन्डिंगली माने तदनुसार पॉलिटिकल scholars have treated various forms of regionalism which include economic regionalism, linguistic regionalism, political regionalism and even sub-regional movements in the general frame of regionalism. Next देखिए what is sectionism when a region wants to end its association from the nation sectionism कौन संबंध विच्छेद नीति गोटे संबंध विच्छेद नीति कौन ना when a region गोटे प्रदेश जो कौन चाहे से सब जो एसोसिएशन मान से सब जोड़ी अच्छे जो चाहिए से सब कौन संबंध समस्या कौन अलग करदेव टू कौन पेपर ना सीन इट सेल्फ अज सेपरेट काउंट्री इन द एंटिटी इन द वाल मैप गोटे वाल मैप से निजर निर्दिष्ट गोटे एंटिटी को सत्ता को से देखा से कौन कर सेपरेट होगा चाहिए सच एक्सट्रीम फ्रॉम द रीजनलिज्म इज नोन सेक्शनिज्म। दिस फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म एभाल्ड माने कौन ना विकसित होइछि कोड होइछि ना एजेड फियाजोस नागालैंड नेशनल काउंसिल एंड टी मुइभास नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड
In the similar way, militants of Kashmir can also be said to follow this form of regionalism as they are persistently ମାନେ लगातार कमिटिंग ब्लड पार्ट मैंने लगातार कौन खून खराब सब कर कौन पे ना से सेपरेट स्टेट करने स्वप्न को पूर्ण करने गोटे सेपरेट स्टेट करवा लगातार खून खराब करने पछई हटुना आ लगातार यहपर सब करती राइट शॉर्ट नोट ऑन सन्स ऑफ द सॉइल मैंने भूमिपुत्र तत्व कौन गोटे भूमिपुत्र मैंने सन्स ऑफ द सॉइल इज एन एलिमेंटेड कॉन्सेप्ट टाइपिंग the people place birth and conference sometime benefits rights rules and responsibility on the them मैंने कौन एटा कोड बाहर ना सन ऑफ द भूमिपुत्र तत्वटा कोड बाहर गोटे कनसेप्ट बाहर धारणा टाइपिंग पीपुल टू देयर प्लस मैंने जन्मरू जो बाहर गोटे आ कौन ना कन्फरेन्स ऑन बेनिफिट्स किसी बेनिफिट्स पाइबा किसी अधिकार पाइबा रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच मे नॉट अप्लाई टू अदर्स मैंने आउ एटा सब ताकू मिलबो आउ का मिलबोनी सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन अंडरलाइंस the view that a state specifically belongs to maintain linguistic group or inhabiting it for the state constitute the exclusive homeland man matrubume or its main language speaker who are the son of the soil and local residents all others who live in the real settlement there and whose mother tongue is the non state main language are declared outsider माने कौन से जो मदर टंग जी कहला से मातृभाषा आ जो मदर टंग जी कह पाउनी से कोन आउटसाइडर नै से माने किछि सुविधा नै ताकू छाडी जो भूमि तत्व माने कोन निज अंचल प्रति निज प्रेम आ ताकू ही अधिक किछि सुविधा मिलिबो दिस आउटसाइडर माइट हैव लिव्ड इन द स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम और हैव मिग्रेटेड कोन चली जिवे से अंचल रु फॉर मोर रिसेंटली बट दे आर नॉट रिगार्डेड एज द सन्स ऑफ द सॉइल नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द कॉलोनियल सेक्शन नेशनल सेक्शन कम्युनल सेक्शन मैंने कॉलोनियल कौन औपनिवेशक विच्छेद कौन आउ नेशनल विच्छेद कौन जातीय आंतर्जातीय नेशनल सेक्शन मैंने विच्छेद कम्युनल सेक्शन कौन धर्म संप्रदाय जो विच्छेद कौन ना दिस जनरली नोन आज वार्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस यह सब कौन पे होची ना गोटे इंडिपेंडेंस होची इंडिपेंडेंस वार जनसका फॉर्म ए मदर कंट्री और इम्पार्शियल स्टेट गोटे कौन मातृभूमि कहीं गोटे इम्पार्शियल गोटे अलग स्टेट नेशनल सेक्शन मीन्स सीडिंग कंप्लीट फ्रॉम द नेशनल स्टेट वर्स लोकल फ्रॉम द एंटिटी ऑफ नेशनल स्टेट और अनदर एंटिटी ऑफ द सेम स्टेट नेक्स्ट सेंट्रल और कम्युनल सेक्शन इन द वेयर द सीडिंग एंटिटी इज कंप्लीटली बाउंडेड by the original state versus peripheral section with the seeding along the border of the original state. Next देखिए राइट इज शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक रीजनलिज्म इकोनॉमिक रीजनलिज्म माने कौन ना अर्थनैतिक आंचलिकतावाद माने हम देखिबा इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म इकोनॉमिक फैक्टर माने कौन रीजनलिज्म सब डेवलपमेंट कौन साहाय्य करछि माने कंट्रीब्यूट करछि For example, good example है some the states or regions are better in the term of development like infrastructure के state कौन infrastructure develop थाउची healthcare development थाउची विमान विकसित थाउची जॉब अपॉर्चुनिटी मध्य ए सब कौन विकसित थाउची ए गुल को मध्य कौन करछि ना अर्थनैतिक आंचलिकवाद रे कौन कंट्रीब्यूट करछि these economic factors cause inequality problems between regions for example good example the formation of a state like Jharkhand and Telangana were based on the lack of development the problem कौन झारखंड तेलंगाना कौन डेवलपमेंट अभाव रही कहीं नक्सलिज्म has the root of economic deprivation of the people belonging this region नक्सलिज्म से कौन फास्ट मूल हो बस इकोनॉमिक कौन अर्थनैतिक डेवलपमेंट कौन हानि कर पीपुल आर बिलोंग दिस रीजन नेक्स्ट देखिए राइट शॉर्ट नॉन एंथेटिक रीजनलिज्म तो इंडिया हैज मेनी एंथेटिक डिफरेंसेस नेक्स्ट डिफरेंसेस दिस हैज बीन प्रूवन बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मानव विज्ञान सब रिसर्च होची इंडिया इज होम टू अज मेनी अज 645 scheduled tribes and recognized by the constitution these ethnic differences from the basis for demands for political autonomy and section for instance the Nagas or Nagaland are demanding a national based on their ethnic identity. Some demands have taken from the violent and armed struggle with the establishment of governments. All these factors pose their Indian unity. Right, short note on political regionalism. राजनीतिक आंचलिकता कौन Indian politics and its political parties showcase the regionalism present in our country. Political expansion of leaders remain a major source of regionalism. For example, regional political parties have used to the regionalism and linguistic identities to secure votes. They have created
an imaginary threat from the outside or imagine kon dhamok deba अन्य मान को to promise their vote bank for securing their land or for themselves and elimination outsider regional parties that prime element in various state have campaigned from this agenda. Next देखिबा right short note on secularism. Secularism माने कोन ना the term secular meaning being separate from religion माने कोन प्रत्येक religion separate हेबा or having no religious basics. A secular person is one who does not his moral values to any religion. His values are to product of his rational and scientific thinking. Secularism means separation of religion from political. Separation को धर्म को राजनीतिक पृथ्वीकरण करबा अर्थनीति पृथ्वीकरण सामाजिक और कल्चर सब जो आसेक्ट अच्छे जीवन से पृथ्वी करवा क्या धर्म को एंड रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज प्लुरल पर्सन मैटर इट एम्फासाइज डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड फुल फ्रॉम फ्रीडम all religion and tolerance of all religions. It also stand for equal opportunity for followers of religions. माने कौन एरा स्टैंड करछि ना इक्वल समस्त जे कोन से सब प्रत्येक धर्म लोक मानको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलबो एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन पार्टिकुलरली ग्राउंड रिलीजन. आ कोन करछि ना जो रिलीजन को नेगिर किछि ने कोन रिलीजन पर आधारित काहा को मध्य पक्षपात करा जिवनी. नेक्स्ट देखिबा व्हाट राइट द शॉर्ट नोट ऑन सर्वधर्म संभाव्य कोन Indian philosophy of secularism related to Sarvadharma Sambhava means that the destination of the parts followed by the religion is the same. Though the parts themselves may be different, which is means equal respect of all. मैंने समस्त प्रत्येक धर्म को समान सम्मान मिलियो. This concept embarrassed माने कौन embarrass माने कौन खुशी रे निज करबा and promoted माने promote करबा by personal like विवेकानंद and महात्मा गांधी is called positive secularism that reflects to what dominant ethos of Indian culture. एथोस माने कोन प्रकृति राइट ए शॉर्ट नोन सेपरेटिज्म जे डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट माने कोन डिमांड करे सेपरेट स्टेट करबा विथ इन द इंडियन यूनियन टू मेनी टाइम्स लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटीज भाषागत जो भाषा ये लोक थांचे एथनिक माइनॉरिटीज विथ इन द स्टेट कम टुगेदर एंड यूनिट अगेंस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी इन द स्टेट द काइंड ऑफ सब रीजनलिज्म वाज valid by the state recognition act of 1956. The most recent examples include the formation of Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh and Telangana. So कौन और उदाहरण सब कारण सेपरेटिज्म लो. राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनिज्म. सांप्रदायिक बात प्रथम स्टेज कौन फर्स्ट स्टेज इंक्लूड द इनसाइट माने कौन अंतर्दृष्टि पकाई द पीपल बिलीव इन द पार्टिकुलर रिलीजन दैट हैव सिमिलर इंटरेस्ट सच एज पॉलिटिकल फाइनेंशियल social and cultural interest for political perspectives of India. Indian society is a group of people from Indian different region, language and religions, but not a country. For citizen of India, different people have different leaders who declare themselves as a national, regional, religious guest leaders. Next देखिए right sort of liberal communism उदार सांप्रदायिकवाद कौन the second stage of एरा कौन second stage का communism second stage के liberal communism beings with the people consider the social, monetary, cultural and political interest of the people following particular religion and dissimilar भिन्न that the belief of other religion. This phase of communism is termed liberal communism. ये term जो phase टा जो स्तर रही है कौन ना उदारवादी सांप्रदायिकवाद जन people who have believe in liberal communism जो माने कि ये communism को कौन विश्वास करती से कौन assume that the interest of the assume माने ग्रहण करती the interest of the people of India can amalgamate and interest of the one country. amalgamated माने कौन एकीकृत हम कहि परबा. नेक्स्ट देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन सुपर स्टेट रीजनलिज्म. सुपर स्टेट रीजन कौन सुपर स्टेट रीजनलिज्म इज मैनिफेस्टेशन को अभिव्यक्त करते हैं कौन ना ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी ऑफ नॉमिनल स्टेट गोटे कौन बहुराष्ट्र ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी को से अभिव्यक्त करते हैं कि सुपर स्टेट रीजनलिज्म in this form for regionalism the group of states unites to make common views on the issues of mutual interest by a base another group of states or times against the union. The group identity forged माने को जाली is a negative character the based on specific issues but is the permanent unification of the state identities in collective identity even at times intergroups rivals tension and conflicts may tend to continue constantly along with their cooperation. Northeastern states in India have the superstate regionalism. Next देखिए right short note on interstate regionalism.
इंटरस्टेट रिजनलिज्म इज कॉन्टिन्यूअस माने कोन ना कहा सीमा जो सब कहा सीमा हबा विथ लोकल टेरिटरीज विथ इन्वॉल्व्स constructing man wisdom of the identities of the one more states against another. This form of regionalism is issue specific for example disagreement between Karnataka and Tamil Nadu over the distribution of Kaveri water may be interpreted in interstate region. Interstate regionalism is a type of regionalism. Interstate regionalism is a type of regionalism man actually that is significant that where the part of the state tribes ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ନିଜର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଦେୟରଫୋର୍ ଇଟ୍ ଟେକେନ୍ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଇନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମସ୍ ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ as well as the nation. For instance, there is a feeling of a coastal region and western region in the Odisha. Coastal region is the Telangana, region in the Andhra Pradesh. Next देखिबा write short note on positive effects of regionalism. माने जो regionalism अछि तार positive effect प्रभाव कोन कोन अछि on positive side it helps strengthening the nation. गोटे positive side कोन है जो स्ट्रेंथ अच्छी स्ट्रेंथ माने कोन हम जो कहि परिबा स्ट्रेंथ बेले सुदृढ़ करता है भारत जो स्ट्रेंथ को सुदृढ़ करता है माने साहाय्य करता है द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो भाषागत सब संगठन स्टेट्स गिविंग ऑटोनॉमी वेरियस रीजन इन नॉर्थ ईस्ट क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट टू हेल्प दैट नेशन दिस हैव रिमूव द फिशर्स माने दरा जो फाटता है आपको से कौन रिमूव करता है व्हिच इफ यू हैव द कंटिन्यू टू एग्जिस्ट मे बी हैव बिकम फैटल माने कोन घातक. It has brought imbalanced regional development and regional issues to focus on the opportunity to solve them. Creation of a new state like Uttarakhand had resulted into fast growth of it. And जो उत्तराखंड जो अलग कराला रीजनलिज्म रो अलग कराला पर से कोन फास्ट ग्रोथ देखाला जे कोन हल ना क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जो गठन कराला उत्तराखंड से कोन हार्ड रिजल्ट इनटू द फास्ट ग्रोथ ऑफ इट. यार गोटे पॉजिटिव रिजनलिज्म रो गोटे कोन गोटे हम कहि पारे उदाहरण एग्जांपल कहि पारबा. नेक्स्ट देखिया राइट इज शॉर्ट नोट ऑन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिजनलिज्म. इट हाम्पर्स माने कोन बाधा दै थाए कोन ना इकोनॉमिक ग्रोथ रे अर्थनैतिक विकास रे बाधा दै थाए कि रिजनलिज्म दा इनस्टेबिलिटी क्रिएटेड बाय द इरोडर्स माने हम कहि पाबे नष्ट करथाई इनस्टेबल अस्थिरता कोन गोटे सृष्टि करथाई कोन नष्ट करबा सब मोर इवर द फेथ ऑफ इन्वेस्टर्स माने कोन विश्वास को से नष्ट करथाई आ जदी रिजनलिज्म चालजी बेले को इन्वेस्टर को से इन्वेस्ट करियो के चाहिबनी. This has a serious effect of the standing for country in the world forum. This affect the capacity of union to engage effectively with the outside world. It created serious internal security challenges with which can explored by the force inimical to India. Inimical माने हम कहबे विरोधी थाए इंडिया मानकर it affects the politics in of the country. राजनीति को ये विरोध करथाय प्रभाव पकड़ाए और जो रिजनल डिमांड्स बिकम्स नेशनल डिमांड्स माने कोन नेशनल डिमांड बोले से रिजनल आंचलिक डिमांड को से प्रभाव पकड़ाए. गिव पॉलिटिशियंस अपॉर्चुनिटी टू प्ले डाटी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल मानक कोन गोटे अपॉर्चुनिटी है गोटे डाटी पॉलिटिक्स करबा गोटे अपॉर्चुनिटी दे थाए कि रिजनलिज्म बा आंचलिक बाद एंड डिभोट द अटेंशन फ्रॉम द अदर इंपोर्टेंट इश्यूज आ कोन गोटे इंपोर्टेंट इश्यूज बदल रे से गोटे निजर डाइवर्ट करथाय अटेंशन को कोन से डाइवर्ट करथाय भ्रमांड करथाय. It has many times result into the extra bounded on the execute माने कुशो इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स स्पेशल पैकेज etc. तो इतले नेगेटिव रिजनलिज्म प्रभाव बा इफेक्ट. तो एहि प्रकार मु यूनिट 2 रो 3 मास क्वेश्चन आपन से शेयर करली. जते आपन पीडीएफ चाहती ताले डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम लिंक अछि जेते आपन जॉइन हेंतु आपन मानु घर पीडीएफ मिल जो. थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो.